Welcome in the video on prepositions. I am Dr. Vinita Bhadoria, Associate Professor of English, Government College, Behror. In previous videos, I will discuss and explain to you articles, forms of articles, type of articles, and use of articles. In this video, I am explaining you preposition, what is preposition and what are its forms. Definitions. Prepositions are short words that usually stand in front of nouns, sometimes also in front of gerund verbs. On, in, to, for, all these are prepositions. Prepositions or prepositional phrase indicate relationship between other words in a sentence. Many prepositions tell you where something is or when something happened. Now the main definition. Word preposition is made of two words, pre and position. Pre means before and position means placed. Hence, preposition is the word or phrase which placed before a noun or a pronoun. In Hindi I can explain you. प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन. यहाँ प्री का अर्थ है पहले और पोजीशन का अर्थ है प्लेस्ड. अर्थात वह शब्द या फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है. यह संबंध सूचक शब्द या फ्रेज होता है जो किसी वाक्य में उक्त नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से स्थापित करता है. इट रिलेट other words of the sentence. Ending a sentence with a preposition is not a grammatical error. अगर कोई वाक्य किसी preposition पर ख़त्म हो रहा है, इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो sentence grammatically wrong है. नहीं, वो right भी हो सकता है. Prepositions often tell us where one noun is in relation to another, such as The coffee is on the table beside you. हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के साथ दूसरे शब्दों का संबंध बताता है. But they can also indicate more abstract ideas such as purpose or contrast. Example, we went for a walk despite the rain. बारिश के होते हुए भी हम घूमने गए. तो यहाँ ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, भाव है जो कि दिख नहीं रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड और एलिमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. With, at, from, into, during, including, of, to, in, for, about, like, through, over, with, along, following, across, behind, out, around, down, off, regarding, with regard to. All these are prepositions. Forms of prepositions. There are four forms of preposition. What are those? Those are simple preposition, compound preposition, participle preposition and prepositional phrase. चार तरह के होते हैं, चार रूप हैं इसके. prepositions के चार तरह से इस्तेमाल होते हैं. simple preposition. preposition of one word are called simple preposition. जो एक शब्द से बने होते हैं उन्हें हम साधारण prepositions कहते हैं. such as in, of, to, at, by, for, from, of, on, out, through, till, up, with, down, etc. So many other. Compound preposition. Prepositions
formed by adding a prefix to a noun. अगर हम संज्ञा के साथ कुछ प्रीफिक्स कर देते हैं, आगे कुछ जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव के साथ कुछ जोड़ देते हैं या एडवर्ब के साथ कुछ जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन. सो prepositions formed by adding a prefix to a noun, adjective, or adverb are called compound prepositions. For example, about, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, below, beneath, beyond, inside, etc. Participle prepositions. Some present participle are also used as prepositions. कुछ present participles जो हैं उनको भी preposition की तरह use करते हैं, as concerning, considering, during, bearing, notwithstanding, pending, regarding, respecting, touching, etc. Last one is prepositional phrases. Some phrases also serves as single preposition. कुछ ऐसी phrases होती हैं जिन्हें कि हम single preposition की तरह use करते हैं. A prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition. Prepositional phrase एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो कि कई सारे prepositions से एक preposition के द्वारा consist किया जाता है, बनाया जाता है. Its object and any word that modify that object, most of the time it modifies a verb or a noun. और ये इसका काम क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है वर्ब और नाउन को. These two kinds of prepositional phrases, which two kinds of prepositionals? Modified verb and modified noun. These two kinds of prepositional phrases are called adverbial phrases and adjectival phrases respectively. वर्ब के साथ जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उनको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं और नाउन के साथ जो मॉडिफिकेशंस आती हैं उनको एग्जेक्टिवल फ्रेजेस कहा जाता है. इट यूजुअली इंक्लूड्स अ प्रीपोजिशन, अ नाउन और प्रोनाउन and may include an adjective. It does not include the verb. Prepositional phrases नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ यूज की जाती हैं, नॉट विद द वर्ब. इन टाइम, इन डिमांड, इन ऑफ फोकस, इन एन अप्रोर, इन आंसर टू, बाय लक, बाय एक्सीडेंट, violent, by all accounts, by all means, on pain of, on the air, on balance, on a diet, on a journey, according to, because of, agreeably. These are few words which explains prepositional phrases: in course of, in favor of, in front of, away from, because of, by dint of, by means of, in accordance with, in behalf of, in comparison to, in compliance with, in the event of, on account of. So many words are there which are prepositional phrases. These are few examples of prepositions: beside, behind, between, in, below, next to, on, above, through, beside, behind, by, opposite, between, around, down, above, outside. So all these are some prepositions. ये कुछ उदाहरण हैं preposition के. In the next video I will explain you
functional type of prepositions and the use of prepositions, omission of preposition. These three things I'll tell you in the next video. In this video, I will tell you about the forms and what is preposition with lots of examples. Thank you very much.